Now the polymers. So objectives after studying this unit, we will able to explain the terms monomers, polymer, and the polymerization and appreciate their importance. Distinguish between the various classes of the polymers and the different types of the polymerization process. Appreciate the formation of the polymers from the mono and the bifunctional monomer molecules. Describe the preparation of the some important synthetic polymers and their properties. Appreciate the importance of the polymers in the daily life. So copolymerization has been used by nature in the polypeptides which may contain as many as 20 different amino acids. Chemists are still far behind. Do you think that day life would have been easier and colorful without the discovery and the varied applications of the polymers? The use of the polymers in the manufacture of the plastic buckets, cups, and the saucer, children toys, packaging bags in synthetic clothing materials, automobiles, tires, gears, and the fuels, electrical insulating materials, and machine parts has been completely revolutionized the daily life as well as the industrial scenario. Indeed, the polymers are the backbone of the four major industrial industries, namely the plastics, elastomers, fibers, and the paints and the varnishes. The word polymer is coined from the two Greek words poly means many and the mer means per. Mer means unit or the part. The term polymer is defined as very large molecule having higher molecular mass 10 to the power 3 to 10 to the power 7 U. These are also referred to as the macromolecules which are formed by the joining of the repeating structural units on a large scale. The repeating structural units are derived from the some simple and reactive molecules known as the monomers and are linked to each other by the covalent bonds. The process of the formation of the polymers from the respective monomers is called the polymerization. Now the classification of the polymers. There are several ways of the classification of the polymers based on the sum of special consideration. One of the common classification of the polymer is based on the force from which the polymer is derived. Under this type of the classification, there are three subcategories. पहला natural polymer. So these polymer are found in the plants and the animals. Examples for the protein, cellulose, starch, some resins and the rubber. इसके बाद फिर आता है the semi synthetic polymer. तो cellulose derivative such as the cellulose acetate, rayon, and the cellulose nitrate etc. are the usual examples of this subcategory. फिर आता है synthetic polymers. तो a variety of the synthetic polymers such as the plastic, polythene, synthetic fibers, nylon 66 and the synthetic rubber Buna F are the examples of the man-made polymers extensively used in the daily life as well as in the industry. Polymers can also be classified on the basis of their structure, molecular forces, or the modes of the polymerization. What are the polymers? Types of the polymerization reaction. Now, types of the polymerization reaction. There are two broad types of the polymerization reaction, that means the addition or the chain growth polymerization and the condensation or the step growth polymerization. In this type of the polymerization, the molecules of the same monomer or the different monomers add together on a large scale to form a polymer. The monomers used are the unsaturated compounds, for example alkenes, alkynes and their derivatives. This mode of the polymerization leads to an increase in the chain height, and the chain growth can take place through the formation of the either free radicals or the ionic species. However, the free radical governed addition or the chain growth polymerization is the most common mode. ये दिया हुआ है इधर एडिशन पोलीमराइजेशन और द चेन ग्रोथ पोलीमराइजेशन का दिया हुआ है. फिर उसके बाद आता है मैकेनिज्म ऑफ द एडिशन पोलीमराइजेशन. Free radical polymerization. A variety of the alkenes or the dienes and their derivatives are polymerized in the presence of the free radical generating initiator. Catalysts like the benzoyl peroxide, acetyl peroxide, butyl peroxide, etc. For example, the polymerization of the ethene to the polyethene consists of the heating or exposing to the light a mixture of the ethene with a small amount of the benzoyl peroxide initiator. The process starts with the addition of the phenyl free radical formed by the peroxide to the ethene double bond, thus generating a new and larger free radical. This step is called a chain initiating step. As this radical reacts with another molecule of the ethene, another bigger side radical is formed. The repetition of this sequence with new and the bigger radicals carry the reaction forward, and the step is termed as a chain propagating step. Ultimately, at some stage, the product radical thus formed reacts with another radical to form the polymerized product. This step is called a chain terminating step. The sequence of the steps involved in the formation of the polythene are depicted as follow. पहला चेन इनिशिएशन स्टेप, इसमें दिया हुआ है बेंजोइल पेरोक्साइड दिया हुआ है, ये टूट गया और फिनाइल रेडिकल बना दिया. इसके बाद फिर आता है
चेन, इसके बाद फिर आता है चेन प्रोपेगेटिंग ऑफ टेप। चेन प्रोपेगेटिंग ऑफ टेप में दिया हुआ है ये दोनों, और फिर टूट के फ्री बना दिया। फिर आता है चेन टर्मिनेटिंग ऑफ टेप, जिसमें फॉर द टर्मिनेशन ऑफ द लॉन्ग चेन दीज फ्री रेडिकल्स कैन कॉम्बाइन इन डिफरेंट वे टू फॉर्म द पॉलीथीन। वन मोड ऑफ द टर्मिनेशन ऑफ द चेन इज शोन एज अंडर। तो ये दोनों मिलेगा तो इससे पॉलीथीन बन जाएगा। इसके बाद फिर आता है द एडिशन पॉलीमर। The addition polymer formed by the polymerization of a single monomeric subspecies are known as the homopolymers. For example, the polythene discovered above is a homopolymer. The polymers made by the addition polymerization from the two different monomers are termed as the copolymers. Buna F, which is formed by the polymerization of the buta-1,3-diene, and aphtarine is an example of the copolymer formed by the addition polymerization. तो ये दिया हुआ है 1,3-ब्यूटाडाइन, ये दिया हुआ है एफ्टारीन। इन दोनों को मिलाएंगे तो बन जाएगा ब्यूटाडाइन एफ्टारीन को पॉलीमर ब्यूना एफ बन जाएगा, जिसका स्ट्रक्चर ब्यूना एफ का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से है कि ये दिया हुआ है प्लस ये दिया हुआ है, ये और दोनों को मिलाएंगे तो ब्यूना एफ का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से आता है। इसके बाद फिर आता है सम इम्पॉर्टेंट एडिशन पॉलीमर्स। तो सबसे पहला इसमें पॉलीथीन। तो polythenes are the linear or the slightly branched long chain molecules. These are the capable of rapidly softening on heating and hardening on cooling and are the thermoplastic polymers. These are two types of the polythene as given below. पहला low density polythene LDP. It is obtained by the polymerization of the ethane under the high pressure of 1000 to 2000 atmosphere at a temperature of 350 to 570 Kelvin in the presence of the trappage of the dioxygen or the peroxide initiator catalyst. The low density polythene is obtained through the free radical addition and the H atom abstraction. It has highly branched structure. These polymers have straight chain structure with some branches as shown below. Low density polythene is chemically inert and tough but flexible and a poor conductor of electricity. Hence it is used in the insulation of the electricity carrying wires and manufacture of the squeeze bottles, toys and the flexible pipes. फिर आता है high density polythene. So it is formed when the addition polymerization of the ethene takes place in a hydrocarbon solvent in the presence of the catalyst such as the triethyl aluminum and the titanium tetracolloid Ziegler Natta catalyst at the temperature of 333 Kelvin to 343 Kelvin and under pressure of 6-7 atmosphere. High density polythene by the obtained consists of the linear molecule as shown below and has a high density due to the close packing. Such polymers are also called linear polymers. High density polymers are also chemically inert and more tough and hard. It is used for the manufacturing buckets, dustbin, bottles, pipes, etc. फिर इसके बाद फिर आता है poly tetra fluoroethane Teflon. Teflon is manufactured by the heating tetrafluoroethane with a free radical or the persulfate catalyst at a high pressure. It is chemically inert and resistant to the attack by the corrosive reagent. It is used in the making oil films and the gaskets and also used for non-stick surface coated utensils. जैसे कि टेट्राफ्लोरोइथीन है, इसको कैटलिस्ट या हाई प्रेशर में किए तो ये बन गया टेफ्लॉन। इसको बाद फिर आता है पोली एक्रेलोनाइट्राइल। द एडिशन ऑफ द पोलीमराइजेशन ऑफ एक्रेलोनाइट्राइल इन द प्रेजेंस ऑफ ए पेरोक्साइड कैटलिस्ट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द पोली एक्रेलोनाइट्राइल। जैसे कि पोलीमराइजेशन या पेरोक्साइड इफेक्ट किए, पेरोक्साइड कैटलिस्ट किए तो एक्रेलोनाइट्राइल है जो पोली एक्रेलोनाइट्राइल में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद फिर आता है पोली एक्रेलोनाइट्राइल is used as a substitute for the wool in making the commercial fibers or the alone or the acrylan. उसके बाद फिर आता है is CH2CH6H5N is a homopolymer or the copolymer. तो it is a homopolymer and the monomer from which it is obtained is a strand and the monomer from which it is obtained is a styrene C6H5CH12CH2. फिर आता है condensation polymerization or the step growth polymerization. तो this type of polymerization generally involves a repetitive condensation reaction between the two bifunctional or the trifunctional monomeric units. These polycondensation reactions may result in the loss of the simple molecules such as the butter, alcohol, hydrogen, chloride, etc. and lead to the formation of the high molecular mass condensation polymers. In this reaction, the product of each step is again a bifunctional species and the sequence of the condensation goes on since each step produces a distinct functionalized species and is independent of each other. This process is also called as the step growth polymerization. The formation of the pterylene or the dacron by the interaction of the ethylene glycol and the terephthalic acid is an example of this type of the polymerization. तो इसमें आता है कि एथिलीन ग्लाइकोल हो गया इथेन 1,2 डायोल, फिर टेरिथैलिक एसिड हो गया बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, इन दोनों को मिलाएं तो टेरिलीन और डैक्रोन बन गया। इसके बाद फिर आता है सम इम्पॉर्टेंट कंडेंसेशन पॉलीमर्स, तो पॉलीअमाइड्स आता है।
These polymers possessing amide linkage are important examples of the synthetic fibers and are termed as the nylons. The general method of the preparation consists of the condensation polymerization of the diamines and with the dicarboxylic acid or the condensation of the amino acid and their lactams. फिर आता है nylons, तो nylon 6,6. It is the prepared by the condensation polymerization of the hexamethylene diamine with the adipic acid under the high pressure and the high temperature. तो इन दोनों को मिलाएं 553 केल्विन और हाई प्रेशर पर तो नाइलिन 56 बन जाता है. Nylon 56 is a fiber forming solid. It possesses high tensile strength. This characteristic can be attributed to the strong intermolecular forces like the hydrogen bonding. These strong forces are also lead to the close packing of the chains and thus impart the crystalline nature. Nylon 56 is used in making sheets, bristles for the brushes and in the textile industry. The nylon 6 it is obtained by the heating caprolactam with the butter at a high temperature. इसके बाद आता है कि कैप्रोलैक्टम का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है. कैप्रोलैक्टम को हीट किया तो नायलॉन 6 बन गया और टेम्परेचर होना चाहिए 533 से 543 केल्विन और H2O होना चाहिए. तो नायलॉन 6 यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ टायर कॉर्ड्स फैब्रिक्स एंड द रोप्स. फिर पॉलिस्टर, तो दीज आर द पॉलीकंडेंसेशन प्रोडक्ट्स ऑफ द डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड द डाइवल्स. डाइक्रोन और द टेरेलिन इज अ बेस्ट नोन एग्जांपल ऑफ द पॉलिस्टर. इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द हीटिंग अ मिक्सचर ऑफ द एथिलीन ग्लाइकोल and the terephthalic acid at 420 Kelvin to 460 Kelvin. The presence of the zinc acetate antimony trioxide catalyst as per the reaction given earlier. Dacron fiber terylene is crease resistant and is used in the blending with the cotton and the wool fibers and also as the glass reinforcing material in the safety helmets. फिर आता है फिनोल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर जिसको कहते हैं बेकलाइट एंड रिलेटेड पॉलीमर्स. तो फिनोल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर्स आर द ओल्डेस्ट सिंथेटिक पॉलीमर्स. दीज आर obtained by the condensation reaction of the phenol with the formaldehyde in the presence of the either an acid or a base catalyst. The reaction starts with the initiation formation of the ortho or the para-hydroxymethyl phenol derivative which further react with the phenol to form the compounds having the ring joined to each other with the through the CH2 groups. The final product could be a linear product called novolac used in the paints. तो इसमें दिया हुआ है OH C2OH फिर इन को मिलाएं तो ये बन गया इसमें ये और फिर ये और फिर इन सबको OH प्लस बॉन्ड से मिला देते हैं तो बन जाता है नोवोलैक जिसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है. इसके बाद फिर आता है कि नोवोलैक ऑन हीटिंग विद द फॉर्मल्डिहाइड अंडरगो क्रॉस लिंकिंग टू फॉर्म एन इनफ्यूजिबल सॉलिड मास कॉल्ड द बेकलाइट. इट इज थर्मोसेटिंग पॉलीमर which cannot be reused or the remolded. Thus the bakelite is formed by the cross linking of the linear chains of the polymer novolac. Bakelite is used for the making combs, phonograph, records, electrical switches and the handles of the various utensils. तो ये हो गया बेकलाइट हो गया ये जिसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है. फिर आता है मिलामाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर. तो मिलामाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर इज फॉर्मेड बाय द कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन ऑफ द मिलामाइन एंड द फॉर्मल्डिहाइड. तो ये मिलामाइन हो गया फिर फॉर्मल्डिहाइड हो गया दोनों को मिलाएं तो रेजिन इंटरमीडिएट बन गया फिर पॉलीमराइजेशन करने पर मिलामाइन पॉलीमर बन जाता है. इसके बाद फिर आता है कि इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द अनब्रेकेबल क्रॉकरी. फिर आता है इन टेक्स्ट क्वेश्चन की राइट नेम्स ऑफ द मोनोमर्स ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स. उसके बाद फिर आता है classify the following as the addition and the condensation polymer terylene, bakelite, polythene and the teflon. तो उसके बाद फिर आता है कोपोलीमराइजेशन. तो कोपोलीमराइजेशन में आएगा कि कोपोलीमराइजेशन इज ए polymerization reaction in which a mixture of the more than one monomeric species is allowed to polymerize and form a copolymer. The copolymer can made not only by the chain growth polymerization but by a step growth polymerization also. It contains multiple units of the each monomer used in the same polymeric chain. For example, a mixture of the buta-1,3-diene and the styrene can form the copolymer. उसके बाद फिर यहाँ पर दिया हुआ है 1,3-ब्यूटाडाइन दिया हुआ है और इधर स्टाइरिन दिया हुआ है. फिर 1,3-ब्यूटाडाइन और स्टाइरिन को मिलाएंगे तो ब्यूटाडाइन और स्टाइरिन कोपोलीमर बन जाएगा. फिर कोपोलीमर्स आर हैव प्रॉपर्टी क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द होमोपोलीमर्स. फॉर एग्जांपल ब्यूटाडाइन स्टाइरिन कोपोलीमर इज क्वाइट टफ एंड इज अ गुड सब्स्टिट्यूट फॉर द नेचुरल रबर. इट इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ द ऑटो टायर, फ्लोर टाइल्स, फुटवेयर कंपोनेंट्स, केबल इंसुलेशन एक्सेट्रा. फिर आता है उसके बाद रबर. तो नेचुरल रबर तो पहला रबर में नेचुरल रबर. तो रबर इज ए
natural polymer and possess elastic property. It is also termed as the elastomeric polymer. In elastomeric polymers, and the polymer chains are held together by the big intermolecular forces. These big binding forces permit the polymer to be stretched. A few cross links are introduced in between the chains, which gives the polymer to retract to its original position after the force is released. Rubber has a variety of the uses. It is manufactured from the rubber latex, which is a colloidal dispersion of the rubber in the water. This latex is obtained from the rubber tree, which is found in the India, Sri Lanka, Indonesia, Malaysia, and the South America में. फिर natural rubber may be considered as the linear polymer of the isoprene 2-methyl 1,3-butadiene and is also called as the cis 1,4 polyisoprene. तो नेचुरल रबर का स्ट्रक्चर ये हो गया. इसके बाद आइसोप्रीन का स्ट्रक्चर ये हो गया, ये आइसोप्रीन है. फिर इसके बाद आता है द सिस पॉलीआइसोप्रीन. द सिस पॉलीआइसोप्रीन मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ द वेरियस चेन्स हेल्ड टुगेदर बाय द बिग वैन डर वाल इंटरेक्शन एंड हैज ए coiled structure. Thus it can be stretched like a spring and exhibits the elastic property. उसके बाद vulcanization of the rubber. The natural rubber becomes soft at the high temperature greater than 335 Kelvin and brittle at the low temperature less than 283 Kelvin and so high water absorption capacity. It is soluble in the non-polar solvent and is non-resistant to attack by the oxidizing agents. To improve upon this physical property, a process of the vulcanization is carried out. This process consists of heating a mixture of the raw rubber with sulfur and an appropriate additive at a temperature range between 323 Kelvin to 453 Kelvin. On the vulcanization, sulfur forms cross-link at a reactive site of the double bonds and thus the rubber gets stiffened. In the manufacture of the tire rubber, 5% of the sulfur is used as a cross-linking agent. The proper structure of the vulcanized rubber molecule are depicted below. तो ये दिया हुआ है, फिर इसमें सल्फर का यहाँ पर मिला दिए और यहाँ पर सल्फर मिला दिए, तो ये वुल्कनाइज्ड रबर बन जाता है. फिर उसके बाद आता है सिंथेटिक रबर. तो सिंथेटिक रबर इज एनी वुल्कनाइज्ड रबर like polymer which is capable of getting stretched to twice its length. However, it returns to the original shape and the size as soon as the external stretching force is released. Thus, the synthetic rubbers are either homopolymers of the 1,3-butadiene derivatives or the copolymers of the 1,3-butadiene or its derivatives with another unsaturated monomer. फिर आता है synthetic preparation of the synthetic rubbers. Neoprene. तो neoprene or the polychloropene is formed by the free radical polymerization of the chloropene. जैसे क्लोरोप्रीन ये है, इसमें 2 क्लोरो 1,3 डाइन का किए और फिर पोलीमराइजेशन करनी है, तो इसमें बन जाता है नियोप्रीन बन जाता है. फिर इट हैज ए सुपीरियर रेसिस्टेंट टू द वेजिटेबल एंड मिनरल ऑयल. इट इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग कन्वेयर बेल्ट्स, गैस्केट्स एंड द होजेज. उसके बाद फिर आता है ब्यूना एन. तो यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द ब्यूना एफ इन द सेक्शन 15.1.3. ब्यूना एन इज ऑब्टेन्ड बाय द copolymerization of the 1,3-buta-1,3-diene and acrylonitrile in the presence of the peroxide catalyst. जैसे 1,3-butadiene और acrylonitrile है, इसका copolymerization किए तो बन गया ब्यूना एन. It is resistant to the action of the petrol, lubricating oil and other organic solvents. It is used in making oil fills, tank lining, etc. In text question है कि explain the difference between the Buna N and the Buna F. Arrange the following polymers in increasing order of the intermolecular forces. The nylon 56 Buna F and the polythene. Now the molecular mass of the polymer. तो polymers properties are closely related to their molecular masses, size and the structure. The growth of the polymer chain during these synthesis is dependent upon the ability of the monomers in the reaction mixture. Thus the polymer sample contains chains of the varying length and hence its molecular mass is always expressed as an average. The molecular mass of the polymers can be determined by the chemical and the physical method. तो पहला, इसके बाद फिर आता है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर. तो ए लार्ज नंबर ऑफ द पॉलीमर्स आर क्वाइट रेसिस्टेंट टू द इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन प्रोसेस एंड आर thus responsible for the accumulation of the polymeric solid-based materials. These solid-based cause acute environmental problems and remain undegraded for quite a long time. In view of the general awareness and the concern for the problem created by the polymeric solid-based, certain new biodegradable synthetic polymers have been designed and developed. These polymers contain functional groups similar to the functional group present in the biopolymers. Aliphatic polyesters are one of the important classes of the biodegradable polymers. Some important examples are given below. तो पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है PHBV का, जिसको कहते हैं पोली बीटा हाइड्रोक्सीब्यूटारेट को बीटा हाइड्रोक्सीवैलिरेट. इट इज ऑब्टेन्ड बाय द PHBV. It is obtained by the copolymerization of the 3-hydroxybutanoic acid and the 3-hydroxypentanoic acid. PHBV used in especially packaging, orthopedic devices and in the controlled release of the drugs. PHBV undergoes bacterial degradation in the environment. तो PHBV को बनाने का तरीका है कि 3-हाइड्रोक्सीब्यूटानोइक एसिड ले लिए,
फिर 3 हाइड्रोक्सी पेंटानोइक एसिड लेनी है और उसको मिलाने पर पीएचवी बन जाएगा। फिर उसके बाद फिर आता है नायलॉन 2 नायलॉन 6, जो कि ये भी एक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। तो इट इज एन अल्टरनेटिंग पॉलीअमाइड कोपॉलीमर ऑफ द ग्लीसिन and the aminocaproic acid and is biodegradable. Can you write the structure of this polymer? तो उसके बाद फिर आता है पॉलीमर ऑफ द कमर्शियल इंपॉर्टेंस। तो इसमें आता है बिसाइड्स द पॉलीमर ऑलरेडी डिस्कस्ड सम अदर कमर्शियली इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स along with the structure are used in the table commercially along the structure and the user are given table 15.1। तो पोलीप्रीन दिया हुआ है। पोलीप्रीन का मोनोमर प्रोपीन है और इसका स्ट्रक्चर ये है। फिर मैन्युफैक्चर ऑफ द रोप्स टॉयज और पाइप्स में आता है और इसका जो ये स्ट्रक्चर है ये वाला स्ट्रक्चर है। उसके बाद फिर आता है पॉलीस्टाइरीन जिसका स्टाइरीन है और ये एज इंसुलेटेड रैपिंग मटेरियल मैन्युफैक्चर ऑफ टॉयज रेडियो एंड द टेलीविजन कैबिनेट्स में आता है। और इसका जो मोनोमर स्ट्रक्चर है वो दिया हुआ है ये वाला। इसके बाद फिर आता है पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी जिसका विनाइल क्लोराइड मोनोमर है और इसका जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है वो दिया हुआ है ये वाला। और इसका जो यूज है वो है मैन्युफैक्चर ऑफ द रेन कोट्स हैंड बैग्स विनाइल फोल्डिंग वाटर पाइप्स में होता है। फिर आता है यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन जिसका जो मोनोमर है यूरिया है और फॉर्मल्डिहाइड है और उसका जो स्ट्रक्चर है वो है ये वाला दिया हुआ है। तो उसके बाद फिर आता है फॉर मेकिंग द अनब्रेकेबल कप्स एंड द लेमिनेटेड शीट्स बनाने का काम आता है। फिर उसके बाद फिर आता है ग्लिप्टल। तो ग्लिप्टल इथिलीन ग्लाइकोल और एथैलिक एसिड से बना हुआ है और इसका जो स्ट्रक्चर है वो ये दिया हुआ है। तो इसका काम जो होता है वो मैन्युफैक्चर ऑफ द पेंट्स एंड द लैक्यूर्स में आता है। फिर उसके बाद दिया हुआ है बेकलाइट। तो बेकलाइट का जो है वो है फिनोल और द फॉर्मल्डिहाइड है और इसका जो स्ट्रक्चर है वो ये वाला दिया हुआ है। इसका स्ट्रक्चर जो है दिया हुआ है ये वाला। और ये होता है फॉर मेकिंग कॉम्स इलेक्ट्रिकल स्विचेज हैंडल्स ऑफ द यूटेंसिल्स एंड द कंप्यूटर डिस्क बनाने के काम में आता है। इसके बाद फिर समरी दिया हुआ है। तो polymers are defined at the high molecular mass macromolecules which consist of repeating of structural units derived from the corresponding monomer. These polymers may be natural or the synthetic origin and are classified in a number of the base. In the absence of an organic peroxide initiated, the alkenes and the derivatives undergo addition polymerization or chain growth polymerization through a free radical mechanism. Polythene, Teflon, Olon, etc. formed by the addition polymerization of an appropriate alkene or its derivatives. Condensation polymerization reaction are shown by the interaction of the bi or the functional monomer containing NH2OH and the phenol-OH group. That this type of the polymerization proceeds through the elimination of the certain simple molecule जैसे H2O, CH3OH, etc. Formaldehyde reacts with the phenol and the methylamine to form the corresponding condensation polymer products. The condensation polymerization progresses through a step by step and is also called a step growth polymerization. Nylon, bakelite and dacron are some of the important examples of the condensation polymer. However, a mixture of the two unsaturated monomer exhibits copolymerization and forms the copolymer containing multiple units of the each monomer. Natural rubber is a cis 1,4-polyisoprene and can be used for and can be made more tough by the process of the vulcanization and with sulfur. Synthetic rubbers are usually obtained by the copolymerization of the alkene and the 1,3-butadiene derivatives. In view of the potential environmental hazards of the synthetic polymer based, certain biodegradable polymers such as PHB and nylon 2 and the nylon 6 are developed as the alternatives.